this differ by a constant. So this eigenfunctions differ by a constant factor, and that constant factor is known as this is called as a uniqueness of this is called uniqueness of eigenfunction. Okay, so if this theorem says that if two eigenfunctions corresponding to same eigenvalues, then these two eigenfunctions are something linearly dependent. This means any one, suppose this phi1 is equal to something constant of phi2. Okay, so the proof is if you assume that this phi1 and phi2, these are the two solution, or you know that this is are the two eigenfunction. These are the eigenfunction of corresponding to same eigenvalues. So these eigenfunctions, we write here this corresponding to same eigenfunction, eigenvalues. Okay, so eigenvalue, and that eigenvalue is defined by suppose lambda. Okay, so then by previous theorem, you know that this p of x and Roskian of these two solution, this Roskian of this phi1x and phi2x, you have already proved that that equals to constant. Okay, so this is you know that if these two are eigenfunctions corresponding to same eigenvalue lambda, so this is constant. Okay, and here you have to prove that this if this is two eigenfunctions corresponding to same eigenvalue lambda, then you have to here you have to prove that this is equals to constant. This is already you have done, but here you have to prove that this phi1 and phi2 are linearly dependent. This means phi1 be the scalar multiple of phi2. Okay, or you can say that this differ by a constant. Okay, means phi1 equals to something constant of phi2. Okay, so here you know that this is given that this phi1 and phi2, these two, this satisfy the boundary condition. The boundary condition at point A. So this is equals to the first boundary condition, that is on 2A. You know that this is a phi1A plus, and this is a phi1 prime at point A, that equals to 0. And here phi2 be also the solution of that same boundary value problem. So this phi2 is also satisfy this boundary condition at same point A. Okay, so here you know that here at least one of them is non-zero, because in boundary condition, if you remember, yeah, this m1 and m2 either both are non-zero, or either at least one is non-zero. Suppose if you assume that this m1 is non-zero, m1 is non-zero, and we try to eliminate this m2 part. So if we multiply here, phi2 prime A in this equation, and here if we multiply phi1 prime by A. Okay, and here we assume that this m1 is non-equal to 0, because you know that in boundary value, this in boundary condition, at least one of m1 m2 is non-zero. Okay, so here we may assume that this one of this is non-zero. So say if we take m1 is non-zero, then we multiply this term, and if we subtracting these two, we get m1 is common, and here phi1a, and multiply by this phi2 prime a minus this phi2a, this
phi 2a multiply phi 1 prime a, and if we subtracting this m1 be the uh, common, and these two terms are cancelled out, so this equals to 0. Okay, so if we use this relation, so we easily get this equals to 0. Okay, and here we have shown that m1 is non-zero. Since m1 is non-zero, then if m1 is non-zero, this means this part is 0. Okay, so this implies you can write here, since your m1 is not equals to 0, so then this portion, that is phi 1a and phi 2 prime a minus phi 2a and phi 1 prime a, that equals to 0. And this is basically you know that this is the Roskian of simply you write this Roskian of phi 1a and phi 2a. Okay, so this Roskian equals to 0 here. Okay, so therefore, in next page we can write this Roskian equals to 0, is Roskian equals to 0, and here this px, this is of this regular term boundary problem. So your px is your non-zero, px is non-zero. So this x belongs to this x is basically this x is belongs to uh, this x is belongs to close interval AB. Okay, so here this x is greater than 0 for all x which is belongs to A and B. So this means here PA is non-equals to 0. Okay, so if PA is non-equals to 0, so you know that if we write this equals to this is not equals to 0, so you can write here okay, so you can write here this PA. So in next page we can write okay. So this PA of Roskian phi 1a phi 2a is equals to 0. Okay, and okay, and okay, so this implies if we write this p of x, and Roskian of this phi 1x phi 2x, that equals to 0 for all x that belongs to A and B. Okay, so for in general point, this condition satisfies. So therefore, we take this is a regular. So this means x is belongs to for all value of that. This equals to 0. And here this is px. Okay, so since px is non-zero in that interval, so since px is non-zero, so those implies our Roskian of this phi 1x and phi 2x, that equals to 0. So this means you can write here this phi 1 of x and phi 2 prime x minus phi 2x and phi 1 prime x, that equals to 0. Or you can rearranging this term, you can find phi 1 prime x over phi 1 x, that equals to phi 2 prime x and phi 2x. Okay, and if we integrate to both sides, if we integrating to both sides, you get here on integrating we get here this log of phi 1x, this equals to log of phi 2x, and plus say some a be a constant, and here a is your integration constant. Okay, so this implies the log of this and log of this. Okay, so this implies you can write here this log of phi 1x is equals to log of a phi 2x.
So this implies this phi 1x is equals to any constant a of that thing. This means these two each other, or you can say this differ by a constant. Okay, so this means this is equals to a constant multiplication of that thing. Okay, so this is a simple proof of the given theorem. So here the result is that if you have a phi 1 and phi 2 are two eigenfunctions, these are the two eigenfunctions corresponding to same eigen value lambda, then these two are dependent, and also this Roscian of that is constant. Okay, so also you know that this is a constant one. Okay, so in next page, if we do numerical, which is depending on the boundary value problem. So in next the power n pi and plus b e to the power minus n pi. Okay, and what is y माइनस पाई और यहाँ से हम लिख सकते हैं व्हाट इज वाई डैश एक्स भी a n e to the power nx minus b n e to the power minus nx. Okay, so y minus pi means a e to the power minus n pi plus b e to the power n pi. Okay, and these two are same. So by using boundary condition, y pi and these are same. So a e to the power n pi plus b e to the power minus n pi, that equals to a e to the power minus n pi plus b e to the power n pi. Okay, so here you can get a simple equation, and that equation is if we coefficients are okay, so a के coefficient will be n pi minus e to the power minus n pi and plus b here e to the power minus n pi and minus e to the power n pi, and that equals to 0. Okay, and from second one we have to find okay the चलिए, so this implies अभी हम इसको और कैसे solve कर सकते हैं, e to the power x minus e to the power minus x, so this becomes a sine hyperbolic n pi. Okay, और ये हो जाएगा if we take minus sign is common, तो this minus this, so this becomes b sine hyperbolic n pi. Okay, so that equals to 0. So this implies a minus b sine hyperbolic n pi, that equals to 0. Okay, so since sine hyperbolic n pi is not equals to 0, so this implies a minus b, that equals to 0. So we get a and b are same. Okay, so again okay, and next boundary condition is minus pi prime के लिए अगर हम करें तो okay, so what is the value of that y dash pi? So and what is the value of y dash pi? Y dash pi is equals to a n e to the power n pi minus b n e to the power minus n pi. Okay, so this is simply n common, a minus a e to the power n pi minus b okay, e to the power minus n pi. And what is y prime minus pi? Okay, so minus pi becomes a n e to the power minus n pi minus b n e to the power plus n pi. So this is n common, a e to the power minus n pi minus b or n pi. And these two are same. So from these two, y dash pi equals to y dash minus pi. So this implies these two are same and then cancel out. So this becomes this thing. So okay, so a
माइनस बी, ओके, ए माइनस बी मिल जाएंगे यहाँ, और ए प्लस बी। ओके, तो इस केस में अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको फाइनली मिल जाएंगे ए प्लस बी इक्वल टू 0। So from this you get a plus b equals to 0. Okay, so a plus b equals to 0 and a minus b equals to 0. So from these two, if we relate that, okay, so here you get a equals to 0 and that equals to 0. Okay, so therefore lambda equals to this is y equals to 0. Okay, so y equals to 0 means therefore yx is 0. So this is your trivial solution, this is not trivial solution. Okay, तो आपको non trivial solution चाहिए, तो इसके लिए आपका ये possibility नहीं होगी, तो therefore lambda is less than 0 is not an eigenvalue. So this is not an eigenvalue. Okay, तो ऐसे ही आप लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर लें और फिर लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लें। तो नेक्स्ट पेज पे हम अगर हम n को 0 कर लें तो और फिर यूज करें, देखें और b की वैल्यू क्या आ रही है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएं और केस 2 की हम बात करें कि लैम्डा अगर मेरा 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ax प्लस b हो जाएगी। एंड यूजिंग आवर कंडीशन y पाई क्या होगा, बेसिकली a पाई प्लस b। okay, and what is y of minus pi, this is minus a pi plus b। okay, and these two are same, so this implies y pi and y minus pi are same. So by using this a pi plus b, that equals to minus a pi plus b, so this implies pb cancel out, 2a pi equals to 0, so a equals to 0। okay, तो यहाँ से equals to 0 निकल जाएगा। and what is your solution, तो y equals to b, y equals to b with your solution, because a equals to 0 to y equals to b। so what is your y prime? okay, so here y prime pi, that equals to 0 and that equals to y prime minus pi। okay, so this implies here you get from that, if we take y prime, so here a equals to 0। okay, so y equals to b into 1। ओके, सो इस केस में आप अगर देखें, इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली, तो व्हाट इज y प्राइम, y प्राइम की वैल्यू हो जाएगी सिंपली a। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्राइम a, तो दिस बिकम्स a इक्वल्स टू 0 हियर, एंड यहां से भी हमें a ही मिलेगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0 निकलना है, तो y इक्वल्स टू b हमारा जो होगा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो इन दिस सेंस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दस लैम्डा मतलब 0 जो है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम, है ना। इसमें आपका 0 निकल के आ रहा है, और विथ आइगन फंक्शन इज ओके, तो आइगन फंक्शन क्या होगा, दैट y equals to yx, so a equals to 0, so this is your eigen function। okay, so for case 3rd, when we take lambda is greater than 0, okay, तो lambda is greater than 0 में अगर आप करें और इसको चेक करें कि when lambda greater than 0 है, तो इसमें आपका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सो दिस मींस y डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0, इसको आप सॉल्व करें जबकि लैम्डा आपका क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 0। ओके, और लैम्डा ग्रेटर देन 0, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज योर yx आप निकालिए। ओके, एंड बाय यूजिंग y पाई और y माइनस पाई, इसे यूज करें और एक ये कंडीशन यूज करें, और इन दोनों से देखें
ए बी क्या आ रहे हैं, ओके, और यहाँ से आप लैम्डा निकालें। तो हम इसकी सोल्यूशन हम बता देते हैं कि इसमें आपका जो आइगन वैल्यू आएगा, आप इसे सॉल्व करिए, टाइम आपके 12 बज गए हैं। तो आइगन वैल्यू आप इसे खुद से करें। आइगन वैल्यू जो है दैट इज लैम्डा, तो लैम्डा आपका n स्क्वायर होगा, जहाँ n इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड आइगन फंक्शन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू sin nx cos nx। ओके, इसको आप जरा देखिए कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप इस पोर्शन को आपको खुद से करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए आप सॉल्व करिए और यूजिंग बाउंड्री कंडीशन यू टू सॉल्व दैट। Okay, so tomorrow we will take another problem, and which is a difficult boundary value problem, and then solve that problem, and also we go through our green function. Okay, तो green function पे भी हम चलेंगे, और आपके असाइनमेंट में हमने जो दिया है उसमें एक प्रॉब्लम आपकी ग्रीन फंक्शन पे भी है। ओके, तो आप ग्रीन फंक्शन क्लास कल कर लें, और फिर जो ग्रीन फंक्शन का जो एक न्यूमेरिकल है उसको आप चाहें तो अभी उसको होल्ड पे रखें, कल की क्लास के बाद आप उसको कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और यदि आपको सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम्स करनी है, तो यदि आपको लगता है कि नहीं बगैर उसके हम कर सकते हैं, तो आप वैसे कर लें, ठीक है सर। सर जो असाइनमेंट है वो सर A4 साइज पेपर में कर सकते हैं या किसी भी शीट ऑफ पेपर में कर सकते हैं? कर लें, लेकिन उसका एक अपना उस पर क्लियरली अपना नाम और अपना, अगर आपको अपना रोल नंबर मालूम है तो रोल नंबर, ओके, एनरोलमेंट नंबर जिनको मालूम है अपना एनरोलमेंट नंबर लिख लेंगे, पर नाम तो अपना सबको पता है, कोर्स सबको पता है, ठीक है। पेज नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, उसी तरह से आप उसकी फोटो खींच लें, चाहे आप A4 पे करिए चाहे आप नोटबुक पे करें, लेकिन साफ साफ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो विजिबिलिटी में उसमें दिक्कत हो जाए। तो उसको कर लें, एक PDF फाइल बना लें और उसको ईमेल के थ्रू में भेज दें, ठीक है। पेज नंबरिंग का खास ध्यान रखें, अब ऐसा नहीं कि पहला पेज के बाद चौथा पेज लगा दिया फिर दूसरा पेज लगा दिया, तो ये चीज ना करें। एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे करना है, तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं हमें कुछ करना, आप अपना टाइप वाइप कुछ नहीं, आप सिंपल उसको हैंड रिटन लिखिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए, चाहे आप रफ पेपर पे लिखो चाहे आप A4 साइज पे लिखिए, हमें वो चीज क्लियरली दिखनी चाहिए और एक सिस्टमेटिक पैटर्न में होना चाहिए, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल ऐसे कर सर। ओके ओके, ठीक है, फिर कल हम 10 बजे क्लास लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.